Have you ever noticed that your face is not exactly the same on both sides? Maybe one eyebrow is higher than the other, or your smile looks a little different on one side. That's what we call facial asymmetry, and it's totally normal. Welcome everyone, I'm Inwal Topo here. I hope you all are having an awesome day. So far, here on this channel we will talk about lifestyle, fashion, self-development, facial structure. We will talk about it. So if that sounds good to you, please subscribe this channel and turn on the post notification on. Please consider following me at Instagram at Inwal Topo. We don't know much about face asymmetry, but dealing with can be a very annoying. Today we are going to talk about why our faces are not perfectly symmetrical. It's not about genetics play a role. Things like spending too much on sun, the food we eat, and even how we live our life can affect our face symmetry. हम लोग ये भी बात करने वाला है कि कैसे आपका how you get older or आपका face changes over time. But here's the cool part. Even our faces are not perfectly symmetrical. That's what makes each of us unique. और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा सिमेट्री रहेगा तभी भी बहुत सारा आदमी को ख़राब दिखता है. I mean, आपका फेस एसिमेट्रिकल है. अगर एसिमेट्रिकल है, ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, अगर आपका नोज क्रूक्ड नोज है या आईब्रोज थोड़ा बड़ा है, देन आपको आपका लुक्स ख़राब दिखाएगा. बट वो थोड़ा है देन इट्स ओके, यू लुक यूनिक एंड यू लुक ब्यूटीफुल. और अगर आपका फेस ऐसा भी है तो तभी भी कैसे आप, और इस वीडियो पे मैं टिप्स देने वाला हूँ. आई विल शेयर सम टिप्स ऑन फीलिंग कॉन्फिडेंट विद द वे यू लुक no matter what our faces are like. Plus, we will dive into some tips and tricks. Facial asymmetrical refers to the natural difference or imbalance between the two sides of a person's face. Normal for faces not to be perfectly symmetrical, but when the differences are more noticeable, it's termed as a facial asymmetrical. One manifestation of facial asymmetrical are crooked nose, uneven eyebrows. crooked nose आपका तब होगा जब कि आप ट्रामा से डीलिंग कर रहे हो या you had past trauma or else genetics और डेवलपमेंट इशू का वजह से crooked nose होता है मोस्टली. अनइवन आईब्रोज तब होता है जबकि अगर आपका आईब्रोज एक ऊपर है एक नीचे, या साइड का ऊपर जा रहा है और साइड का नीचे. और ये मेन पॉइंट है लाइक आपका फेस को एसिमेट्रिकल लुक देने के लिए. और ये जेनेटिक्स, मसल वीकनेस और रात पे सोने का टाइम पे द स्लीपिंग पोजीशन, उसका वजह से ये आईब्रोज ऊपर नीचे तेरा मेरी. एंड दिस आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, लाइक फ्यू एग्जांपल है मैंने बोला. और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो लाइक हम लोग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करता है और हम लोग अपने आप को ध्यान नहीं देता है, डिसिप्लिन, इसका वजह से फेशियल एसिमेट्रिकल होता है. और अगर आपका फेसेस एसिमेट्रिकल है भी, आपको शर्म करने का ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू ग्रेटफुल फॉर योर फेस, बिकॉज यू आर यूनिक और आपका जैसा कोई भी नहीं रहेगा. एंड आजकल लाइक फैशन इंडस्ट्री लाइक बहुत डाइवर्स है. वो लोग न्यू लुक्स देखना चाहता है. और या इफ़ योर ईयर्स और नोज इज़ मोर बिगर, some people will find you interesting and some people might be को अच्छा पाएगा और बहुत सारा आदमी आपको बुरा पाएगा. और that's normal. जैसे कि एजिंग का हिसाब से भी आपका एसिमेट्रिकल का वो होना स्टार्ट हो जाता है. As you start getting older, आपका फेस एसिमेट्रिकल होने स्टार्ट होता है. और ये सब एवरीडे हैबिट्स है जो, और सन पे ज़्यादा रहता है, सन का हीट आता है, यूवी रेस, एंड उसका स्किन हम लोग का ख़राब कर देता है, रिंकल्स हो जाता है और अनइवन जो कर देता है. एवरीडे हैबिट्स के लिए हम लोग का फेस एसिमेट्रिकल होता है. एजिंग कैन मेक
facial asymmetrical more noticeable. Genetics plays genetics plays a huge role on your face asymmetrical. Maybe if your parents' face are asymmetrical and अगर उसका नोज बड़ा या छोटा है then you are going to get that kind of nose. और जेनेटिक्स बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करता है. हमें लाइक जेनेटिक्स में भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए. लाइक मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है बोलकर ऐसा रहने से कैसा होगा. On the other hand, environmental factors also play a part, like how much sun we get, what we eat, and even our habits can affect our face symmetry. अगर आप एक ही साइड पे ऐसा होकर सोते हो तो आपका जो यहाँ का बहुत डिफाइन लगेगा और यहाँ का जो बहुत डिफाइन लगेगा और यहाँ का नहीं. So it's a mix of what we are born with and what we do in our life shapes our फेशियल सिमेट्री. हमारा एवरीडे हैबिट हम लोग का फेस को इफ़ेक्ट करता है. इफ़ यू आर स्माइलिंग ए लॉट यू आर गोइंग टू गेट लाइक स्माइल लाइंस और नोज़ का सामने रिंकल्स और उसका वजह से फेस एसिमेट्रिकल दिखना स्टार्ट हो जाता है. इन ए वर्ल्ड वेयर पीपल थिंक एवरीवन शुड लुक परफेक्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू से नो टू दैट आइडिया. लव योरसेल्फ जस्ट द वे वी आर. Each of us has unique face and that's unique. Sometimes it's not perfectly balanced. That's okay. Instead of feeling bad about it, we should be proud of our difference. When we accept and love the way we look, it helps us feel better about ourselves and it helps us to be perfect. We should remember that beauty comes with all shapes and sizes, but embracing our unique look, we can feel happier and more confident. Let's talk about the ways to fix uneven face. There are two main ways, surgery and non-surgery. Surgeries doctor can do things like fixing your nose, making the chin bigger or adding implants to the cheeks. Surgeries can make big difference. They take time to recover, risks and can have risks. Non-surgery option involve treatment like fillers, botox, injections can make your face more dense without surgery. They work by adding stuff certain areas or relaxing muscles, but they don't last forever. You need to keep getting them done. Rhinoplasty जैसे कि मार्केट पे बहुत सारे प्रोसीजर्स है. आपका जो भी प्रॉब्लम है आप जाके कर सकते हो. जैसे कि राइनोप्लास्टी वो बेसिकली आपका नोज़ को बड़ा छोटा थिन स्मॉल बनाने के लिए हेल्प करता है और इसका एडवांटेज यही है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम को फिक्स करेगा और आपका नोज़ को अच्छा लुक देगा. यू विल लुक मोर शार्प. और डिसएडवांटेज यही है कि ये लाइक ब्लीडिंग इन्फेक्शन. ये आपको आपका नोज़ अच्छा नहीं लगेगा एंड जैसा है वैसे ही रहेगा बोल के आप बहुत लेट रियलाइज़ करोगे. फिलर्स जो होता है कि आपका फेस को ऐसा पम्प बनाने के लिए मदद करेगा, जो कि उसका एडवांटेज यही है कि इट कैन प्लम्प अप योर फेस एंड स्मूथ विंकल्स विदाउट सर्जरी. लाइक उसका डिसएडवांटेज यही है कि यू आर गोइंग टू गेट ब्रशेस, swelling or lumps, and in rare cases it can cause a serious problem. Botox का एडवांटेज यही है कि आपका wrinkles है वो noticeable नहीं रहे and treat some health issues. एडवांटेज यही है कि it can cause headache, rashes, make your muscles weak for a while. It can messed up with your faces. Chin boost, chin augmentation. एडवांटेज यही है कि make your face look more balanced and your chin stronger. Disadvantage यही है कि includes infections, nerve issue, liking how it looks. Always try to talk with doctor before trying these treatments. Concern यही है कि like many people worry about the pain during the procedures. People fear looking unnatural or overdone. Some worry about the cost.
whatever it's worth it. Misconception यही है कि some people think that it's only for rich people, celebrity. ये सोचता है कि ये बहुत dangerous, risky चीज़ सोचता है like this is only for old people और जिसका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है उसके लिए, तो ऐसे नहीं है. Talk to your doctor and ask lots of questions. Learn about the risks, benefits, and cost. Take your time deciding and don't rush. Remember, always remember, it's your face. It's your face, your choice. Make sure you are comfortable, confirmed before making any choices. Practical solution and exercise. Good posture, believe it or not. Posture can affect the symmetry of your face. Skincare routine. Taking care of your skin can also contribute to face symmetry. Use daily, like try to use sunscreen from sun damage. आपको sun damage हो जाएगा. Uneven skin tone, pigmented हो जाएगा आपका skin. Moisturize regularly to keep your skin healthy and hydrated. Balanced diet. Eating a balanced diet, vitamins and minerals, antioxidants. Antioxidants can support overall your skin health. Facial symmetrical, plenty of fruits, stable lean proteins and healthy fats. Healthy fats in your diet nourish your skin from the inside out. Do some facial exercise like stretching, massage, like facial massage to keep your face lifted, relaxed. For brightening glowing skin you can do. If you want me to make videos about face, like exercise for face asymmetry, you can comment down. I'm gonna make video about it. If you are doing facial exercise, make sure you are doing it regularly. ऐसा पार्ट में मसाज करो जैसे कि टेंस मसल्स जो हम लोग का फोरहेड पे रहता है, और या टायर्ड मसल्स जो हमें टायर्ड दिखता. That tongue posture, that's the main thing. Like this is the right tongue posture. आप लोग ने मेरा ये म्यूइंग का वीडियो नहीं देखा है, इसको जाके देख लो म्यूइंग का वीडियो. और बहुत सारा एक्सरसाइजेस आपको चाहिए तो प्लीज़ comment down below. I will make another video regarding like facial exercise, massages. Consistency and dedication is the key. अगर आप लोग एक चीज़ को like daily basis पे करते रहोगे then you are going to get the result. अगर आप वीक पे 2-3 days करोगे नहीं कर and then you will stop doing that, तो नहीं, you are not going to get any result. Make sure you whatever you are doing like regular basis पे करो. Asymmetrical is when one side of your face look a bit different from the other. Things like nose, eyebrows, eyes, guess what? Completely normal. There are few reasons why it happens. Big reason is genetic, just like how your genes determine the color of your eye or the shape of your nose, play a role in symmetrical your faces. Not just about genes. But it's not about genetic. Environmental factors can also come into play, like sun exposure, diet, and even the way how you sleep affect the symmetrical of your face. Over time, for example, always sleep on one side, slightly change shape of your face on that side. And let's not forget about aging. As we get older, our skin loses elasticity. It starts to pull things down. Can make any existing symmetries more noticeable and create new ones. Now you might be thinking, is facial asymmetry should be worried about? The answer is necessarily. In fact, it's a part of what makes unique and interesting. But if you are feeling conscious about it, or if it causing you any discomfort, understandable that you might to do something about it, where treatment come in. Both surgical and non-surgical options depending on what you are looking for. Medical procedures, rhinoplasty, word for nose job, augmentation, significant changes, face overall balance. They are invasive and come with risks. Important to think carefully before going down the road. On the other hand,
There are non-surgical treatments like derma filler or Botox that can temporarily tie your face structure without the need for surgery. Treatment can offer immediate results, not permanent, and will need regular maintenance. And let's not forget about the power of physiotherapy. Exercise can help strengthen facial muscles over time, improving symmetrical naturally. But there's the thing, the goal is not perfect symmetry. Perfection is rated. It's about finding a balanced beauty. It's about finding a balance that enhances your natural beauty. You feel comfortable in your own skin. So whatever you choose to embrace, symmetrical or explore treatment options. Remember that your face tells a story. Remember that your face tells your story. It's what makes you unique. So own it, embrace it, celebrate your individuality. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe to my channel and turn on the post notification on. See you next time. Bye.